And as you all know, in Nagpur, we have temperatures which can go up to about 115-16 degree Fahrenheit or 47-48 degrees Celsius also. And so there are a lot of medicines, remedies in homeopathy which can be used in summer elements. Good afternoon, Dr. Patra. And because of which there are some medicines which are so useful in summer complaints, and maybe in a week's time after Holi, all the summer elements would start coming, and then we have a lot of remedies which basically have problems arising in the summer. Of course, most of the remedies you all know. Yeah, Dr. Babel, she says she has cold Germany. Yes, so in Nagpur, it will be a scorching heat of the sun, and हमारे यहाँ समर के रेमेडीज शुरू हो जाए. The summer remedies which are very very common and which should be thought of in these type of cases. Yes, we have natromure, we have belladonna, gelsemium, gluonine, natrum carb, lot of remedies. So maybe after maybe the next YouTube we will discuss some of the remedies in relation to summer. Before that we can discuss some remedies for fever. There are some remedies, there are some symptoms of fever which are very very important. Nowadays there are a lot of cases of fever coming in our OPD. बहुत सारे fever के cases आ रहे हैं और हम उसको भी एक differentiate कर सकते हैं. We can differentiate that fever arising because of summer season. And there are remedies like we have arsenic, we have belladonna, we have bryonia, we have gelsemium, we have sulfur, lot of remedies. सो आप उसके अंदर भी देख सकते हैं कि कौन से रेमेडीज हमारे इसमें काम कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक अ सिंपल रेमेडी जेल्सीमियम. अब इफ यू टेक जेल्सीमियम, देर आर सो मेनी सिम्टम्स ऑफ जेल्सीमियम फीवर, एंड वी हैव बीन प्रिस्क्राइबिंग जेल्सीमियम फॉर most of the fever cases. When the onset is, we say the onset is very slow and insidious, lot of things. There are other symptoms of gelsemium you should understand in fever, and it is very important to know that in gelsemium, in which fever complaints you have to prescribe gelsemium. Good afternoon, Dr. Uppal. So gelsemium के अंदर what happens in gelsemium fever. Of course there is chilliness, you all know, but in gelsemium the chilliness is from the up and down the back. If you are prescribing on chilliness, there is a very important symptom of gelsemium. Now one more, that is one of the indication of gelsemium. Of course, the other indication of gelsemium is that there is heat and sweat stage which is very long and exhausting. There is heaviness of the eyes, there is dullness, dizziness and drowsiness, and the pulse is very soft, the pulse is slow, it is comprehensible, slow pulse. These are basically symptoms of gelsemium. And now one more habit, that is there is one more question that is on my WhatsApp. So make sure कि आप WhatsApp पे सवाल ना पूछे. तो हम एक सवाल लेते हैं पहले. गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्लेस, डॉक्टर वैष्णवी, डॉक्टर साई रखा, डॉक्टर बाबल, डॉक्टर उपल. गुड आफ्टरनून. एक है, सर पेशेंट को कुछ भी काम के बिना मोटरसाइकिल लेके घूमना चलते जाता है, नथिंग एनी पर्पस, नो वरी अबाउट पेट्रोल, ओनली हैबिट. नाइट में ड्यूटी होंगी तो भी 1 घंटा निकल जाता है, ड्यूटी दरबार करते हैं, घर आने के भी शॉर्ट राइड के बिना घूमना चाहता है. एनी रेमेडीज फॉर इंटरेस्टिंग स्टोरी. सी, वेन एवर यू हैव अ हैबिट ऑफ ग्रोमिंग अराउंड दी व्हीकल, मतलब घूमने का बहुत शौक है, तो आपको देखना पड़ेगा बेसिकली पेशेंट के अंदर बेसिक ऐसा सिम्टम्स क्यों है. अभी हमारे पास रेमेडीज है, ट्रैवल डिजायर्स फॉर अनकंट्रोलेबल डिजायर टू ट्रैवल. अगर आप रूब्रिक खोलेंगे माइंड के अंदर देखेंगे ट्रैवल डिजायर्स फॉर. नाउ ट्रैवल डिजायर्स फॉर, और इसके अंदर एक रूब्रिक है अनकंट्रोलेबल, ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल, वो कंट्रोल ही नहीं कर सकता, उसको घूमने का बहुत ही शौक है. उसके अंदर एक रेमेडी आती है मक्सॉल. बाकी डिजायर्स फॉर ट्रैवल के अंदर ट्यूबरकुलम है, मक्सॉल है, कैलकेरिया फॉस है, इग्निशिया है, आयोडम है. बट अनकंट्रोलेबल आप मक्सॉल सोच सकते हैं. ऑफकोर्स इससे ज़्यादा अगर सिम्टम मुझे मिलेंगे तो मैं आपको बेटर प्रिस्क्राइब कर पाऊंगा. वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर मगीर. सर काइंडली इलैबोरेट ऑन जेल्सीमियम फीवर इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. अभी देखिए, मैंने जेल्सीमियम इसलिए पढ़ाया आपको कि एक बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास. ज़रा फीवर में क्या दवाई देना, फीवर में गर्मी में क्या दवाई देना.
सो अभी तो बेसिकली गर्मी शुरू होने की, बट स्टिल जो मेरे दिमाग में आया जेल्सीमियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी हमको सनस्ट्रोक होता है, वेर एवर वी गेट सनस्ट्रोक, क्या होता है कि हम बहुत डल हो जाते हैं, डिजी हो जाते हैं, सो जाते हैं, वी ट्राई टू स्लीप, वी कांट डू एनीथिंग, देयर इज हेवीनेस ऑफ द आईज, देयर इज थर्स्टलेसनेस। तो ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं फीवर के अंदर। अगर आप देखेंगे फीवर ऑफ जेल्सीमियम, अभी दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जेल्सीमियम के अंदर, ये आपको पता होनी चाहिए। आप किताब में लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अभी जेल्सीमियम फीवर के अंदर सबसे मेन सिम्टम है, एक जेल्सीमियम के अंदर देयर इज बर्निंग हीट, प्रिकलिंग ऑल ओवर द बॉडी। पेशेंट बोलता है मेरे को ऐसी चुभ रहा है, गर्मी चुभ रही है। दो रेमेडीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, फर्स्ट इज चाइना एंड सेकंड इज जेल्सीमियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत जरूरी, बिकॉज जेल्सीमियम के अंदर इसके आगे देर इज ड्राई हीट एज इफ द नीडल्स आर प्रिकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ। पेशेंट बोलता है मेरे को नीडल प्रिक के समय फीवर ऐसे लगता है चुभा रहा है नीडल, मुझे ड्राई हीट रहती। चाइना जेल्सीमियम नाइट्रिक एसिड भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ जेल्सीमियम, दैट इज the patient wants to be quiet in any station. In any stage of fever, the patient wants to be quiet. This is a third most important symptom of Gelsemium. And fourth, heaviness of the eyes. In Gelsemium, the eyes becomes very heavy. The patient can hardly open the eyes. He becomes so dull, so dizzy, and so drowsy. It is said 3 Ds of Gelsemium: dull, dizzy, drowsy, heaviness of the eyes, pricking of as if like needle in fever. That is what I see in cases of Gelsemium fever. Of course, again, if you see the Metabolic, there are a lot of symptoms of Gelsemium, but these 4-5 symptoms are very very important in Gelsemium fever, especially during summer. Good afternoon, Dr. Disha. Yes, I hope you understood Gelsemium fever, and this is a very very interesting remedy. So make sure that you understand Gelsemium in fever, so that you are able to differentiate the fever of Gelsemium, the fever of Natrimur, Belladonna, Bryonia, Antimcrude. Because what happens in summer, most of the patient who come for fever, लोग आके क्या बोलेंगे आपको, मुझे बहुत डल लग रहा है, मुझे बहुत काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है सो जाना चाहिए, अंधेरे में जाके लेटने इच्छा हो रही है, all the symptoms of dull, dizzy and drowsy. So don't confuse Gelsemium with any other remedies, because there are so many remedies for fever having very very similar symptoms like Gelsemium but not Gelsemium. So ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स इफ यू सी आर्सेनिक ऑल्सो, आर्सेनिक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस रहती है, बट द आर्सेनिक वीकनेस इज समथिंग डिफरेंट दैट ऑफ Gelsemium weakness. So make sure that you are able to differentiate the remedy and prescribe. Okay, like for instance, we have remedy called Antimcrude. Now, Antimcrude is also a remedy for sun fever, but Antimcrude में क्या है, while walking in the sun, if the patient has fever, then that is Antimcrude. In Antimcrude, once is very important that there is succession of chill followed by heat and followed by thirst. मतलब पहले ठंडी लगती है, फिर हीट लगती है, फिर पानी की प्यास लगती है, दैट इज Antimcrude. And I have discussed a case of Antimcrude fever which I cured where the CRP was 200 before the medicine. After 5 days the CRP came to 2. This is the importance of knowing the symptoms of remedy so that you do not miss any prescription. Okay, let us go forward. So I am not able to solve a case of PCOD. We'll send on WhatsApp. Please help. Okay, Dr. Disha, very very nice that if you do send the whole case on WhatsApp, so that it is very important in case of PCOD. The whole case taking is very important. Okay, so make sure that you have a good case so that we can. I will tell you what remedy comes to my mind. Okay, because what happens, I had an interesting case. I am telling you, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था। मैंने काफ़ी दवाई दी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा पेशेंट को। फिर पेशेंट ने मुझे बोला कि क्या होता है कि मैं जब बहुत थक जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि वो काम करूँ, ये काम ना करूँ, वॉट एवर आई डू, वॉट एवर आई वर्क, आई जस्ट वॉन्ट टू नॉट सी दैट पार्ट। मैं वो पार्ट देखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि वो हुआ ही नहीं मेरे साथ में। ऐसा आँख बंद करके मैं घर चले जाता हूँ ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। फॉर इस रूब्रिक को हमने रेपेटराइज किया।
बहुत सारे हमने रेमेडी चेंज किए, बट इस रूब्रिक को रेपेटाइज किया तो क्या दवा निकली पता है मैंने क्या लिया? मैंने लिया सिंपल क्लोजिंग आई एमुलेट्स एंड आई प्रिस्क्राइब कालिका। सो ये इम्प्लाइड रूब्रिक है। इम्प्लाइड रूब्रिक के अंदर कभी कभी मुझे नॉर्मल रूब्रिक से फर्क नहीं पड़ता, देन आई यूज माई विजन ऑफ इम्प्लाइड रूब्रिक्स, मेरे 25 साल के 30 साल के एक्सपीरियंस, और मुझे काली कार्प से फर्क पड़ गया। सो ये सब भी ऐसा होता है। सो कभी कभी क्या होता है, एक नॉर्मल केस टेकिंग के अलावा इम्प्लाइड केस टेकिंग जो डॉक्टर बाबुल एंड डॉक्टर्स जो जर्मनी से मेरे पास आए थे, दे हैड कम टू मी, कुछ implied rubrics I have shared with them. So this is called implied rubrics. Sometimes, if you don't understand the case, if you're not getting results, you can understand the case with this type of rubrics and you will be able to solve the case. Sir, medicines for ED, diabetic aged 53 years. See, whenever a case comes to you और पेशेंट को ईडी का प्रॉब्लम है, पेशेंट डायबिटिक है, मेक श्योर, बिकॉज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन द बॉडी, ये आपको देखना जरूरी। डायबिटीज की वजह से नस के अंदर, आपके नर्व के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, वीक हो जाते हैं, एंड मसल्स भी वीक हो जाते हैं, एक्टिविटी वीक हो जाती है। सो ये नॉर्मल सिम्टम ऑफ डायबिटीज करेगा दैट ईडी पेशेंट को हो गया। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका डायबिटीज आप कंट्रोल करने की कोशिश करिए तुरंत, ताकि वो मेंटेनिंग कॉज जो डायबिटीज के मसल्स, डायबिटीज के वजह से, शुगर के वजह से जो मसल्स और नर्व में प्रॉब्लम आ रहा है वो ठीक हो जाए, और फिर हमको एक प्योर केस मिलता है ठीक करने के लिए। ये केसेस के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं लाइकोपोडियम, आप ट्राई कर सकते हैं डामियाना, आप ट्राई कर सकते हैं एग्नेस कास्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट को अगर सेक्सुअल वीकनेस है तो मुझे बहुत एक अच्छी रेमेडी पता है जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे प्रैक्टिस में, दैट इज अब्रोमा अगस्टा। आप भी यूज़ कर सकते हैं अब्रोमा अगस्टा, एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोग को, मैंने डॉक्टर बारबल को भी व्हेन दे वर इन माय क्लिनिक, आई हैव ऑल्सो टोल्ड देम दैट व्हेनेवर आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ केस इन डायबिटीज, जब भी डायबिटीज क्योर करने की कोशिश करता हूँ या ठीक करने की कोशिश करता हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ में मैं कभी कभी ऑर्गन रेमेडीज भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, आइदर एलएम पोटेंसी के अंदर या फिर मदर टिंचर के अंदर, ताकि वो इफेक्ट तुरंत आए, और इससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इफ डॉक्टर बारबल इज देयर, शी कैन ऑल्सो शेयर व्हाट शी हैज लर्न फ्रॉम योर इन डायबिटीज। आई हैव बीन प्रिस्क्राइबिंग sometimes with the constitutional medicine, LM potency in repetition, and sometimes mother tincture, so that the case works well, and she has seen a lot of case of diabetes under my treatment which has given me good results. So Dr. Alnaki, आप अगर देखेंगे आपके केस के अंदर डायबिटीज को भी कंट्रोल कीजिए, और साथ में फिर अगर आपको देखना है एक्यूट मेडिसिन, ये आप दे सकते हैं लाइकोपोडियम एंड ऑल। यस, अब्रोम अगस्टा मदर टिंचर, वही बोलना चाह रहा हूँ मैं, बिकॉज अब्रोम अगस्टा मेरे पास लो पोटेंसी में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने मदर टिंचर में आप देखेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सो कभी कभी हमको थोड़ा प्रैक्टिस में फ्लेक्सिबल रह के प्रिस्क्राइब करेंगे तो अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब्रोम अगस्टा, यस, मदर टिंचर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और मुझे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले इसके। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा एक दो तीन चीज़ें अब्रोम अगस्टा के मैं बारे में आपको बताना चाहूँगा जो आपको याद होना चाहिए। मतलब अब्रोम अगस्टा एक ऐसा रेमेडी है कि द पेशेंट हैज़ लॉट ऑफ यूरिनेशन फॉलोड बाय वीकनेस एंड एग्जॉशन। द पेशेंट हैज़ लॉट ऑफ यूरिनेशन followed by weakness and exhaustion, and weakness of abroma augusta is most of the time after stools and after maturation also. इसलिए अब्रोमा ऑगस्टा बहुत अच्छा काम करता है, आप ट्राई करके देखिए और मुझे पता है आपको रिजल्ट आता है। ऑफकोर्स अब्रोमा ऑगस्टा के अलावा और एक दवाई जो मेरे दिमाग में आती है जो आपको ट्राई करना चाहिए, दैट इज टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा भी बहुत अच्छी रेमेडी है जो हम प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी एंड जिम्नेमा सेल्फ जो मैंने डॉक्टर बारबल से, इफ डॉक्टर बारबल इज ऑनलाइन एंड इफ शी कैन अंडरस्टैंड हिंदी, शी विल शेयर समथिंग विच आई हैव openly told in my clinical practice. They were attending my clinic and I have told that with constitutional medicine sometimes I use LM potency and mother tincture to boost the constitution. So the experience on retrograde ejaculation, patient is physically normal, all tests are normal. Yes, Dr. Sarma, recently only I think 2 months back I had a case of retrograde ejaculation, and let me tell you that I had this patient was with me for the past 6 to 8 months. He was not getting relief. Then ultimately what I did, I gave a patient a constitutional medicine depending on Sora. Soric, Sora मैं पूछ के
दिया हूँ, and I gave the patient Brattacar and it worked very well. So Dr. Babel says yes, it worked fast. So I was just telling my experience of treating diabetes, one of the very interesting disease. And if you're able to treat diabetes, blood pressure and thyroid in today's world, अगर आप 3 बीमारी पे मास्टरी कर लेना, तो 70-80% केसेस भी आप क्योर कर ले तो आपकी प्रैक्टिस कभी कम नहीं होगी, बिकॉज डायबिटीज केसेस आर ऑन राइज. सो आई हैव शेयर्ड few cases of 15 days. They were there with me with Dr. Babal and other doctors, and I have shown them results by using LM potency, mother tincture and constitutional medicine in my practice, which has given me very good results. So डॉक्टर साहब जो जिसने मुझे पूछा था कि डायबिटीज़ में यस इम्पोर्टेंसी था, तो आप उसके अंदर भी ट्राई करिए कि आप शुगर पेशेंट का कंट्रोल कीजिए, ऑटोमेटिक इम्पोर्टेंसी में फ़र्क पड़ जाएगा. Dr. Parth says, sir, Lacasis 200, no, you can't repeat Lacasis 200. That is a strict no. At least I have not repeated in my practice. So I don't repeat those constitutional medicines. Still, if you feel the remedy is right and if you need to repeat, please use LM potency. उसके अंदर आप रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज LM potency के अंदर क्योर पहले होता है, एग्रेवेशन बाद में होता है. और सेंटिसेबल पोटेंसी में एग्रेवेशन पहले होता है और क्योर बाद में होता है. अगर आपने मेरा LM पोटेंसी का वर्कशॉप किया होगा तो आई थिंक डॉक्टर बाबल मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग अबाउट LM potency which we did in the Gondia college, So in LM potency, the amelioration comes first and then comes the aggravation. And when the aggravation comes, stop the LM potency. I have prescribed CPR 1M potency Thursday and Sunday for whole month. Is it safe? There are a lot of doctors who are prescribing 1M potency every day, and they say that they have got good results. So I would not be able to comment on that, because first of all, I do not repeat every weekly such potencies. So if you find the patient is improving, you can continue. Okay, I can answer on that. Sir, other remedies for retrograde E? No, that was something मैं वही बताना चाह रहा था हूँ कि बेसिकली व्हाट हैपेंस के मैंने उसको ट्राई किया बहुत रेमेडीज, बट काम नहीं की. बट आई प्रिस्क्राइब ऑन द सोरिक माइजम. मैंने सोरिक माइजम जाके प्रिस्क्राइब किया, एंड द पेशेंट वाज मिसप्लेस्ड, and the patient was acting like a child. And retrograde means misplaced, no, what which is not proper. The patient is doing that, having that problem, retrograde. So वो भी ब्राटाकार से मैच होता है. ब्राटाकार वो केस में काम कर गया. ऐसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन मेरे पास रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन के लिए नहीं है, बिकॉज मेरे पास हार्डली अभी तक 15-20 केस आए होंगे, और बेसिकली आई हैव प्रिस्क्राइब बेसिकली ऑन दी सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन. सर, प्लीज टेक सेशन ऑन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. Yes, a lot of my students who are there who are wanting me to do a webinar on epilepsy. अभी मुझे मेरे स्टूडेंट्स बोले थे, सर एपिलेप्सी पे वेबिनार लीजिए, हमारे पास एपिलेप्सी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, क्योरेटिव रिजल्ट्स हैं, और हमारी दवा देने के बाद किसी को भी अटैक अभी तक नहीं आया है. सो मैं भी सेमिनार एपिलेप्सी पे पहले लेना चाहूँगा. अभी तो हम थोड़ा फ्री हुए, हमारे इंटरनेशनल डॉक्टर्स जस्ट आके के 10 दिन ही हुए. अभी हम थोड़ा सांस ले पा रहे हैं, और अभी हम एपिलेप्सी पे शायद लेने वाले, आगे जाके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे भी लेंगे हम. Sir, when we try different medicine, do we need to use any antidote before moving to new medicine if results not achieved? Actually, you don't need to do an antidote. बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नक्सम के देने से एंटीडोट हो जाता है, बट इफ योर रेमेडी इज राइट, इट इज वो अगर आपकी रेमेडी राइट है तो वो कॉन्स्टिट्यूट प्रिस्क्रिप्शन भी हो गया और एंटीडोट भी उसके साथ में हो जाता है. सर, एनी सजेशन फॉर सोरियासिस? यस, सोरियासिस तो मैंने कहा हूँ मेरे साथ कि मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, क्योरेटिव रिजल्ट्स है सोरियासिस के, और मैक्सिमम केसेस सोरियासिस के जो मैंने देखा मेरे लाइफ में, इट वाज मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सप्रेशन, मेंटल सप्रेशन, डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली सप्रेशन, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सप्रेशन, बट माइंड के अंदर से हमने प्रिस्क्राइब किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है मेरे पास. कभी कभी कोई पेशेंट को सोरियासिस का आता है जो हमारे पास बोलते हैं कि मैं 50 साल से दवाई खा रहा हूँ, सब एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, सब मेडिसिन हो गए, फिर भी सोरियासिस है. उन केसेस के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स हैं. टाइम डेफिनेटली लगता है, बट वो केसेस के अंदर भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वो केसेस भी क्योर होते हैं, और हमने किए भी है. सो आई कैन अश्योर यू दैट इट इज़ क्योरेबल, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिसिटी ऑफ कंप्लेंट, इट टेक्स टाइम.
सी होम्योपैथी के अंदर एवरी सेल इज कनेक्टेड टू एवरी सेल, हर सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होता हो, चाहे माइंड हो, चाहे बॉडी हो, चाहे लिवर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो हम ये नहीं बोल सकते कि कनेक्टेड है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड. गल्फ जॉब वैकेंसी, ओके सर. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए दवाई. सी रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है एंड बहुत क्रॉनिक बीमारी में आता है, ये सिफिलिटिक माइजम में आता है. तो इसकी दवाई में एज सच आपको नहीं बता सकता, बिकॉज के ऐसी दवाई तो बहुत सारी होम्योपैथी के अंदर है. बट ये केसेस के अंदर केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देखना है कि कौन सा इसके अंदर सिफिलिटिक सिम्टम है जिसपे हम प्रिस्क्राइब कर सके. केस टेकिंग के अंदर ये हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ रहती है जो हमको मिलती है. कभी कभी क्या होता है केस टेकिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी प्रिस्क्राइब ऑन द होल केस, चाहे उसमें सोरिक सिम्टम भी आए, साइकोसिस भी आए, सिफिलिटिक भी आए. तो भले दवाई आपकी निकल जाती है बट यू आर नॉट एबल टू गेट द रिजल्ट बिकॉज यू आर प्रिस्क्राइबिंग ऑन द सोरिक सिम्टम. सो इसके अंदर आपको देखना है कि सिफिलिटिक सिम्टम कौन से है, जो सिफिलिटिक सिम्टम रेमेडी से मैच हो, जो सिफिलिटिक सिम्टम पेशेंट से मैच हो, और तभी उसको हमको क्योर मिल सकता है. और बाकी आर्थराइटिस की दवाई आप देखेंगे होम्योपैथी में दर्द की दवाई तो बहुत सारी है, स्टार्टिंग फ्रॉम रस्टॉक्स टू ब्रायोनिया टू मैकफॉस टू रूटा टू बेलिस्पर. वैसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो पेन कम कर सकती है. बट आर्थराइटिस के अंदर क्योर करने के लिए एक एंटी माइजमेटिक रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक पूछना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को सिफिलिटिक सिम्टम ऑफ द केस. ईयर नमनेस आफ्टर स्नीजिंग ऑन वन साइड लास्ट अक्टूबर, side unknown, given arnica, arnica sulfur phosphorus. Phosphorus has brought slight improvement but has stagnated. Aconite not yet given. See, if you have a case, if there is, sorry, I would basically answer in English because Dr. She is from Germany. See, whenever you have a problem that the patient is suffering from numbness, what is numbness? Means there is loss of sensation or less amount of sensation. Now I would try to tell you two things about it. Numbness means because of continuous trauma, mental trauma, the patient has become numb. Now it does not understand what is happening in the mind and the body. That means, you know, the ear has become numb because there is some irritating factors of the nose which is called numbness of ears. So ask in the case taking what are those factors that has irritated the patient so much that she does not want to hear anything now. That is the implied part of numbness. Okay. After that, if you feel numbness of ear after sneezing, there are some remedies which you must know. First, always think about verbascum. Second, think about platina. Third, think about calcarea floor. And fourth, think about magnesium carb. But what I said about the implied rubric, the ear has become numb. That means the patient has become numb because of continuous thing which she does not want to hear, and people are telling her that thing. That's why there is numbness. So I have cured a case taking this this thing. Okay, Dr. Babal, I hope you got something about that. Please tell medicines for PSA 22. Setuji, when the PSA is 22 means the whole body is actually involved in that, no? It's fully body involved. Colleague will ask morning, tomorrow evening. Okay. So इसके अंदर you have to think about, of course, the remedies, Sabalsar, Conium, Bratacarb is there, but the case is important, Dr. Setu. HIV positive response, yeah. So I have cases who are HIV positive. They are doing very well with the medicines. They are not taking any other medicine, only homeopathy medicine, but still their HIV report is still positive. Okay, but the cells, the count are much better than what the patient had come with me. मैंने पहले जो ऑपरेशन कराया था सर, बट अभी उसके अंदर भीड़ लाइक वुंड हो गया. प्लीज एनी मेडिसिन. Yeah, so you can think about, you know, remedies like ruta, conium, calcarea floor, sulfur, and sulfuric acid. Sir, what are key symptoms before prescribing Thuja? अब मुझे आप थूजा पूछेंगे तो मैं दो प्रकार का आंसर दे सकता हूँ. इन थूजा mentally the patient is brittle. Things that the body is made up of, limbs are made of glass and all that. There is fixed ideas. So Thuja patient is fixed ideas, and the body feels as if and the patient feels as if she is brittle,
fixed delusion she has. And fixity you can have anywhere in the body, and mentally also the patient is fixed. That's the first part of Thuja, which normally I would see now. But baki symptoms Thuja ke hai, you can have that sweat like honey, and the sweat is like honey. It is very sweet, attracts the flies. Then elements from vaccination. Then you can have Thuja, fixed ideas, delusion, and a lot of delusion Thuja. So warts in Thuja, cauliflower like growth, dryness of skin, hard skin, itching in the skin. See all the symptoms of Thuja, but mentally I would say fixed ideas, that's Thuja. How to calm patient with medicine, aggravation कम. या कभी भी अगर आपको लगा कि भाई पेशेंट को हमारे दवाई खाने से एग्रेवेशन हो गया है, सबसे पहले यू कैन आस्क द पेशेंट टू टेक फाइटम, बिकॉज आफ्टर 3-4 days द एग्रेवेशन विल ऑटोमेटिकली गो. फिर भी अगर आपको लगता है कि एग्रेवेशन नहीं जा रहा, तो जो आपने पोटेंसी दी है उसको बोलो एक 1 tablet इन हाफ कप ऑफ वाटर, टेक 1 spoon ऑफ वाटर एंड थ्रो द रेस्ट ऑफ द वाटर. उससे भी बहुत बार फर्क पड़ जाता है एग्रेवेशन में. ओके. डॉक्टर बाबल सेज कलीग विल आस्क मॉर्निंग tomorrow evening. Okay, yeah, you ask and then get back to me. Okay, so today yes, I hope you understood something, Dr. Mominu, how to come the yes. Okay. That depends on how you are basically managing your patient. If the patient has come up with some complaints and he's the Soric symptoms are more and the psychosis is better, then wait for the patient. Don't give any medicine because Sora is there. Sora आ गया है, तो वेट करेंगे तो आप ठीक हो जाएगा. ओके, सो डोंट नीड. हेलो, एनी मेडिसिन फॉर हाइपोकैल्सीमिया आफ्टर पैनिक अटैक, ब्लाबला लीमन. Hypocalcemia means the calcium is low. See, whenever you use the word panic attack, remember that whenever you use the word panic attack, then it could basically be anything. After panic attack, the calcium also can get low. After panic attack, the patient can get a heart attack. After panic attack, the patient can get anuria also. So जब भी panic attack आएगा, whenever the word panic attack comes, there are 3-4 remedies which are very, very important that you have to think about. The first is cannabis indica, the second is digitalis, the third is coffea, the fourth is calcarea carp, and the fifth is carcinosin. In your case, if it is hypoglycemia, you can repeat calcarea carp in low potency, would suffice. But I think start with aconite. Whatever hyponatremia, whatever panic attack, you can always think about the remedy. Of course, if you see panic attack also, we have remedies like Muxol and Naxomic also. So if there is hyponatremia also, understand these remedies and what are the other symptoms which the patient suffers from, and then you can choose from these remedies. Moreover, think why is the patient the same way in Sora, very panicky, or there was some cause which was so severe that the patient landed up in panic attack. Then you understand the cause and then go with the rubric fear panic attack, and then club those symptoms and you can get the remedy. Shaking of head with no cause. You prescribe me 4 or 5 medicines, I choose Lycopodium from them, got amazing result. Very nice, doctor. Can you share the case with us? If you can share the case, everybody would learn. Everyone, please pay attention. We have a good results, so if you can share something about the case, because I also don't remember in what context I must have told the remedy. So if there is no time, we can share. Yes, you can share. Shaking of head with no cause. You prescribed me 4 or 5 medicine, I chose Lycopodium. Very nice. So it is basically congratulations to you, because with the 4 or 5 medicine you prescribed Lycopodium. So the credit goes to you, and very nice. I am very happy that at least with this half an hour session, you are able to give results to your patient. Thank you so much. And if possible, share the case so that everybody can learn. I still don't know exactly what remedy I would have told you, doctor. Please, there's no name of you. I should. Okay, so you can share some of the symptoms of Lycopodium, what you thought and you prescribed, because the credit goes to you. Okay, very nice, and full credit to you. Congratulations. And बस ऐसे रिजल्ट देते रहिए ताकि आप भी खुश, मैं भी खुश और पेशेंट भी खुश. थैंक यू सो मच. सो और कोई क्वेश्चन? शायद कुछ क्वेश्चन तो ऊपर चले गए, शायद मैं भूल गया आंसर करने के लिए.
Dr. Barbara, I hope you understood something and you prescribe and then you can get. Sir, please suggest medicines for dry burning heat joint pain. Dry burning heat joint pain. I don't know whether I have ever had this symptom in my practice, dry burning heat. So whenever it's dry burning in joint pain, three remedies that comes to my mind. The first is bryonia, second is nux moscata, third is you can take Econat also. These 3-4 remedies I think should suffice for the results. So it is already half an hour up, and thank you everybody. Thank you for joining me, and I hope you enjoyed as much as I enjoyed sharing knowledge with me. So until next Saturday, bye and see you.